Very good evening, friends. In the last lectures, we were discussing APGP. Just we have finished the sheet examples. Now we move on the module examples, page number 6.8, exercise 6A. निकालिए पहले. Page number 6.8. इस एक्सरसाइज में आप जो होमवर्क में क्वेश्चन है वो पहले लिख दो. पेज नंबर 6.8 एक्सरसाइज 6 से बाकी कुछ हम करते हैं वो बताना पड़ेगा यहाँ. Example 6 in the homework, 7 in the homework, 9, 11, 12, 13, 14 also, that's to be part of homework. 16, that's the revision part of the 11th or 12th standard that you can do. 16. After 16, you can solve the 23. 23 के बाद 24 and 25. These are the questions that friends you can solve easily. Clear? Now question 2 किस तरह फाइंड करेंगे? The nth element of the sequence is a -1, 2, -4, 8. -1, 2, -4, 8. So on. पहले हमको चेक करना पड़ेगा दिस इज द अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ये जीपी है, रेशियो सेम है. 2 by -1 is -2 and -4 by 2 is also -2. nth टर्म की बात है, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ द टर्म इन Tn. तो Tn is equal to a into r raised to n minus 1. ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन जो है वो इंटरेस्टिंग है. सी a इज द -1, तो -1 लिखना पड़ेगा, into r is the -2 raised to n minus 1. These steps I can write this way, -1 into -2 I can represent -2 into -1 into 2, that is a -2 raised to n minus 1. Then I can write this next step is a -1 raised to 1 into -1 raised to n minus 1 into 2 raised to n minus 1. I can write these steps. Again you can see the base are same, then you can add the power. Then -1 raised to 1 plus n minus 1 into 2 raised to n minus 1. तो पहली टर्म आएगी -1 raised to n into 2 raised to n minus 1. और ऑप्शन देख सकते हो आप, क्वेश्चन इज क्लियर. दिस -1 raised to n into 2 raised to n minus 1 इज टू बी ए राइट ऑप्शन. आप कहेंगे ये ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ये नहीं मिलेगा आपको. यू टू एसेस द सिंप्लीफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, देयर आर गुड एग्जांपल फॉर सिंप्लीफिकेशन. यू हैव नॉलेज नाउ एपीजीपी.
सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखिए आप. After second friend, the question number 3. Sigma है, sigma means sum of the term, sigma of root 2i minus 1. Sigma of root of 2i minus 1 I running from 4 to 7. मीन्स सम में जो एडिशन है, सम है, इसको हम एडिशन कहते हैं, वो 4 to 7 टर्म्स का सम है. 4 मीन्स 4 टर्म बिटवीन 5, 6 एंड 7. तो पहले आपको टर्म जो है रूट ऑफ 2i माइनस 1 में रखना पड़ेगा 4. अगर 4 रखेंगे i की जगह तो 4 2 सा 8, 8 माइनस 1 इज 7. तो पहले i की वैल्यू रूट 7. देन यू कैन राइट प्लस बिकॉज सिग्मा शो द समेशन इज द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स. बाद में लिखेंगे 5, तो 5 2 सा 10, 10 5 2 सा 10 माइनस 1 इज 9. 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 2 सा 12 माइनस 1 इज 11. एंड लास्ट में है 7, द 7 2 सा 14 minus 1 is 13. Is this option is given in the question or not? That you want to check only. Yes, check कर सकते हो. This is the option is given. Fine. Question 3. Question 3. After question 3, you may see the question 4. -5 25 ये टर्म दी है आपको. -5 25 -125 -125 625. कुछ भी चीज करने के पहले आपको ये ढूंढना है दिस इज द एपी और जीपी. तो ऑब्वियसली इट इज जीपी. 25 बाय -5 is -5 and -125 divided by 25 also -5. The R is clear -5. A is the first term also -5. अब हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन में. The sum of infinitive can be written as. किस तरह लिखेंगे आप सम ऑफ इन्फिनिटिव किस तरह लिखेंगे. जिसके रनिंग फॉर 1 to infinity n का कोई ठिकाना नहीं है. तो और टी एन की बात करेंगे तो टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन -1. तो ए इज -5, आर ऑल्सो -5 रेज टू n -1. This is -5 raised to 1. So this we can say that -5 raised to 1 plus n -1. That is equal to -5 raised to n. This is the value of the Tn. अगर आपको इनफाइनाइट सम में लिखना है तो सम ऑफ -5 द पावर k, यहाँ k ऑप्शन है, and the value of the k running from 1 to infinity. This way, friends, you can represent this term. -5 raised to k, the k value running from 1 to infinity. Fourth question. After 4. आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7. फिर से 7 क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको किस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा पेज है. पेज नंबर निकालो फ्रेंड. 6.8 पेज. मॉड्यूल में 6.8 पेज. The question number 7. It shows that the value of x such that 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x minus 7, 2x plus 7 will be the form of AP. 7 question. The term is given the 8x plus 4 first term,
6x minus 2 and 2x plus 7. ये प्रोग्रेशन जो AP में है तो x क्या है? This term. If it's this progression are in AP, therefore we can say that consecutive difference are same. Therefore, there is 6x minus 2 minus of 8x plus 4 equal to 2x plus 7 minus of 6x minus 2. ये लिख सकते हैं. Therefore, 6x minus 2 minus 8x minus 4 equal to 2x plus 7 minus 6x plus 2. 6x minus 8x is the minus 2x minus 6, and 2x minus 6x is the minus 4x plus 9. 4x you can shift on the side. Therefore, the 4x minus 2x is equal to 9 plus 6, and 4x minus 2x is equal to 2x, and 9 plus 6 is equal to 15. Therefore, x is a 15 by 2. Yes, this is the given option. 15 by 2 is the right option. This is the question 7. आगे जाइए. Just now I am solving the question number 16. Sum of the three integers are in AP. तो यहाँ आपको टर्म ढूंढनी पड़ेगी. If the three terms are given, then you can suppose the a plus d and the a minus d are the term. These are three terms of an AP. ऐसी टर्म आपको ढूंढनी है, वहाँ डिफरेंस सेम है. ऐसी टर्म आपको ढूंढनी है, you can get this simplifications much more easier, etc. The three terms are in AP. आगे बढ़िए. Sum of the three terms is 15. Sum is the three terms is 15. Therefore, we can say that the a minus d plus a plus d is 15. Therefore, the d must be cancelled. Therefore, a plus a is equal to 3a is equal to 15. Therefore, a is equal to 5. ये the first term of the progression, that is the a is 5. आगे. Their product is 80. Product. Now, the product of this term is what? A minus d into a plus d is 80. ये लिखा है. तो a minus d into a plus d, there is the a square minus d square into a equal to 80. तो a आपको पता है, तो 25 minus d square is equal to into 5 is equal to 80. So 25 minus d square is equal to 80 by 5 is 16. Therefore, d square is equal to 25 minus 16 is 9. Therefore, d is equal to plus or minus 3. This is the consecutive difference of the terms are same. Maybe the plus 3 or minus 3. अब आपको टर्म ढूंढनी है. यहाँ the question is given. The integers are. यहाँ हम लेंगे a is a 3 is a common value for the both. A is equal to 5 is a common value. The difference is 3 here, and here the difference is minus 3. तो a आएगा 5, यहाँ भी 5 होगा. a plus d, yes, a plus d means 2. A minus d means 8. 8, 5, 2. A minus d means 2. A plus d is 8. And a minus d is 2. We have two options. Either we can get 258 or 852. Which option is given? As per, you can select the option. 852. Integers are, both are the option. The sum of the integers between these two, the both are the reliable option. Either you can choose the 852 or 258. Both are the right option. गलती ये क्वेश्चन में जा, ध्यान से देखना पड़ेगा. Yes, this is question 16, friends. आगे कुछ इतना कुछ नया नहीं है.
This is a given question in the 6A exercise. These are the questions which is slightly different than competitive exams. Now, friends, you just move on the 6.2, page number 6.14, exercise 6B. यहाँ आप क्या कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the 9 question, the mistake in the question, don't do the question 9. 10 देखिए, good question, simplification में. 1 upon root 3, 1, 2, 3 upon root 3 up to 18 terms. 6B 10. 1 upon root 3, 1, 3 upon root 3 up to 18 terms. ढूंढना है यहां आपको सम ऑफ द 18 टर्म. किस तरह फाइंड करेंगे? सी हियर. In this example, the first term is the 1 upon root 3, A. R is also 1 by 1 upon root 3 is the root 3. ये 3 upon root 3 divided by 1 लिखेंगे तो we can get root 3. And n equal to number of terms are 18. R root 3 है, the value of the root 3 you can check by the calculator, is the 1.73, is obviously smaller than 1, and then you can judge which form is applicable. The formula of Sn is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. The value of the A is 1 upon root 3, R root 3 raised to 18 minus 1 divided by root 3 minus 1. One upon root 3. This you can write is equal to root 3 square raised to 9. This is easy for you. Minus 1 divided by root 3 minus 1. The denominator is given root 3 minus 1. This is the term is given is irrational form. I have to rationalize the form. And for rationalizing form, this you multiply and divide by root 3 plus 1. ये important step रहेगा आपके लिए. We have just done these types of steps in the limit and continuity. 1 upon root 3 is the fix. Root 3 square is a 9. Root 3 square is a 3 raised to 9 minus 1 upon root 3 minus 1, root 3 plus 1 is a 3 minus 1, and into bracket of root 3 plus 1. थ्री थ्री सा 9, 3 सा 27, तो 20 से आपको 3 बार मल्टीप्लाई करने पड़ेगा. 19683 19683 divided by 2. 19683 minus 1 divided by 2 into root 3 plus 1. 19683 minus 1 equal to 19682 divided by 2 equal to 9841. This is a simplification of this stage is a 9841. Bracket of I can write root 3 plus 1. और ये 1 upon root 3 है, I can write in a denominator this is root 3.
अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, दिस टाइप ऑफ ऑप्शन टू बी गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 10, इसलिए मुझे एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना पड़ा. How way you simplify, this is very important in this case, especially for question 10. Nothing new. Simplification is the most important. Yes, friend, mic close the. I hope so. The voice is clear. Okay, okay. I explaining this question. The question 14 is the same we have discussed in the last lecture. That was the 4 plus 44 plus 444 up to so on. यहाँ मैंने पहले एलिमिनेट किया 4, तो ब्रैकेट में लिखा 1 plus 11 plus 111 up to n टर्म्स. ब्रैकेट वाली जो टर्म है दैट वी वांट टू शो टू क्लोजर टू 10 100,000, 10 hundreds थाउजेंड से क्लोज बनानी है. क्लोज बनाने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 9, इसलिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 किया. अब हम क्लोज कैसे कहेंगे, तो इसलिए मैंने बताया द 9 इज द 10⁻1 - 1, 99 10 square - 1, then 10 cube - 1 up to so on n terms.
तो वी कैन स्प्लिट द टर्म देन आफ्टर. स्प्लिट कैसे करेंगे? 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 रेज टू n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स. अब आगे, this is a repeating term the last lecture what we discussed. This is GP. A is a 10, R also 10, N is N, because there are n terms. In the previous case there were 10 terms, and here in this case we can say that 1 plus 1 plus 1 up to n times means n. A into R raised to n minus 1 divided by R minus 1 minus n. 4 by 9 bracket of 10 raised to n plus 1 minus 10 minus 9n upon 9. Clear? After taking LCM, 9 9s are 81. That is equal to 4 by 81 into 10 raised to n plus 1 minus 9n minus 10. पीछे जो ऑप्शन है वो इस तरह आप बना सकते हो, लिख भी सकते हो. This is the question option. Please note these examples, friends, in your book, and then we discuss the further new questions of this module. Stay with us.
यहाँ जो 15 क्वेश्चन है वो रिपीट करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती, बिकॉज दिस सेम क्वेश्चन वी हैव सॉल्व इन लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट पॉइंट दैट वाज सेम। वहाँ सर्टेन टर्म्स थे, यहाँ एन टर्म्स है, इतना डिफरेंस है। द टर्म इज गिवन 4 + 44 + 444 अप टू एन टर्म्स है, तो वहाँ से आप 4 कॉमन निकालिए, तो वी कैन गेट द ब्रैकेट इज 1 + 11 + 1 1 1 up to so on. The bracket is given 111 111. That term we have to make to close to 10 100,000. That's why I am multiplying and divide by 9. The close है 10 से 100 से और 1000 से, पता कैसे लगेगा? That I shown the steps. The 10 raised to 1 minus 1 is 9. 10 square minus 1, 99. 10 cube minus 1, 999. Then you can split the term 10, 10 square, 10 cube, 10 raised to 4 up to so on, and minus of 1 + 1 up to n times. किसी भी टाइप का आंसर हो आपको सेट करना पड़ेगा. दिस इज द फाइनल मोड ऑफ सिंप्लीफिकेशंस. Then 10, 10 square, 10 cube में देखा जाए तो a the first term is 10, r is 10. Difference is not same, therefore it is not a arithmetic progression. Therefore you can substitute the value in the formula. Then the 4 by 9, the outside the value a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 is 10 minus 1. ये 9 है तो 9n होगा. ये ब्रैकेट ओपन ही लिखेंगे तो 10 raised to n plus 1 minus 9n minus 10 upon 4 by 81 लिखेंगे. किस टाइप का आंसर है वो आपको फॉर्म करना पड़ेगा. That was a difficulty from the Porbandar center. Now please other center they have difficulty in the question number 3. Now please see the question 3. वो भी इसी सम है. Question 3 is not difficult. Sigma root of 2i minus 1. Sigma means sum of the term. किसका सम है? Root 2i minus 1 का. टर्म क्या दी है? 4 to 7 मीन 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म. i है. i की जगह आपको 4 लिखना है पहले, तो 4 2 8 minus 1 7, तो रूट 7 आएगा. सिग्मा है मीन्स प्लस, 4 के बाद 5 लिखेंगे तो 10 minus 1 is 9, तो रूट 9. उसके बाद 6 लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 7. दिस वे यू कैन जस्ट एक्सप्रेस द वैल्यू, डोंट फाइंड द वैल्यू. ऑप्शन इस टाइप का है तो हम इस टाइप के लिखेंगे. ऑप्शन में लिखा होगा सम ऑफ द टर्म क्या है तो हम सम लिखेंगे. Then each and every value, friends, you to calculate. Each and every value that you to calculate. If the question is basically depend upon sum, then otherwise no. 15वां क्वेश्चन तक बात कंप्लीट हुई. आगे पढ़िए. That was the question number. ये क्या था भाई? Yes, 15 questions. जस्ट वी हैव फिनिश. एक और भी है क्वेश्चन 16, वो भी ध्यान में रखिए. पूरा अलग है, वहां कंसेप्ट तो कोई चेंज नहीं है, वैल्यू डिफरेंट होगी. सी द क्वेश्चंस नाउ. After the question number 15, friends, you see please the question 16.
0.1 plus 0.11 plus 0.111 up to infinity, up to n terms है. 0.1 plus 0.11 plus 0.111 up to n terms. फिर से 11 1 111 जैसा स्टेप्स है. अगेन यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. बाद में क्या मिलता है सोचिए आप. 1/9 into bracket of this is the 0.9 plus the 0.99 plus 0.999 up to n terms. Each and every value are closer to 1. किस लिए 1 है देखिए यहाँ. I may write 1 minus 1 by 10. 1 by 10 is a 0.1 and 1 minus 0.1 is a 0.9. Each and every value are close to 1. आगे देखिए plus 1 minus 1 upon 10 square. 1 upon 10 square is a 1 upon 100 and 1 upon 100 is a 0.01 and 1 minus 0.01 is 0.99. इस तरह आगे मूव करना है आपको क्वेश्चन में. Plus 1 minus 1 upon 10 cube is a 1 minus 0.001 is a 0.99 plus up to n terms. This is the presentation of the example. This is the only important steps. पिछले वाक्य में 1 की जगह 1 नहीं है, 1 आगे है, वहाँ 10 था, यहाँ 1/10 है, उल्टा हो गया because of fractions terms. Now we can split the term. 1/9 bracket of, we can write the first term is a 1 plus 1 plus 1 up to n times. In each term the minus common. 1/10 plus 1/10 square plus 1/10 cube up to n terms. This we can write, friends. This is n, you know that. In this case, a is a 1/10, r also 1/10, 1/10 square by 1/10 also 1/10, and n is n, and r is a less than 1. तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. a into 1 minus r is to n upon 1 minus r. This is the formula you can apply. So 1/9 n a 1/10 1 minus 1/10 raised to n divided by 1 minus 1/10. The stage of simplification. 1 minus 1/10 is a 9/10. You can write. One minus 1/10 is a 9/10. You can delete 10 specially. It's a separate term. You can delete. Then term is the 1 minus 9 bracket of. Nine minus 1 minus 1/10 is a 0.1 raised to n divided by 9. This is the 9. Sorry, this is the n minus. Sorry, it's a mistake होगी मेरी. N minus. You may write 1/9 into bracket of the 9 minus 1, 9 and minus plus of 0.1 raised to n divided by 9.
You can write 9 9s are 81. Then finally you can write this option. This is a 1 upon 81 into 0.1 raised to n plus 9n minus 1. जिस टाइप का आपका ऑप्शन है इस टाइप में ऑप्शन में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. गुड क्वेश्चन. After the question number 16, now you see the question number 17. 17 question. 17. The sum of the first 20 term of GP S20 is a 244 times the sum of the 10 term of GP. This is the equations given. इक्वेशन क्या है वो समझना पड़ेगा पहले. ध्यान से पढ़िए, यही टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है. Sum of first 20 term of GP is 240 pi times the term of the 10. Then find the common ratio. R find करना है. यहाँ एस की फॉर्मूला होगी, हम लिखेंगे a इंटू 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर. एस 20 है तो n 20 होगा. देयरफॉर एस 20 will be a into 1 minus r raised to 20 divided by 1 minus r. This is the S20 term. N is fixed, and you know that we don't know the things. R is the calculations. And S10 is equal to a into bracket of 1 minus r raised to 10 upon 1 minus r. This information according to the question number 17 about the S10 and S20. And we compare this, substitute the value in the information. S20. Therefore, S20 is equal to 244 times the S10. Therefore, we can say that a into 1 minus r is to 20 divided by 1 minus r is equal to 244 times into a into 1 minus r is to 10 divided by 1 minus r. कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कॉमन है, दोनों साइड निकल जाएगी, वो आप ध्यान से देखिए. a कॉमन, that to be cancel. 1 minus r you may cancel. Then the remaining term is a 1 minus r is to 20 is equal to 244 times of 1 minus r is to 10. ये टर्म आपके पास बाकी रहेगी. आपको लगता है ब्रैकेट ओपन करना है तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो. This is the 1 minus r raised to 20. You can write this way: 1 minus r raised to 10 square is equal to 44 times of the 1 minus r raised to 10. I can write this term r raised to 10 square, and I can write also this one also 1 square. Now again this is the factorization of the a square minus b square. आपको पता लग गया, is the factor of the a square minus b square. The factor is 1 minus r raised to 10 into 1 plus r raised to 10 is equal to 244 times of the 1 minus r raised to 10. Again this 1 minus r raised to 10 must be cancelled. We have simple equation r raised to 10 equal to 244 minus 1. One minus r raised to 10 is equal to 244 minus 1. 1 plus है तो r raised to 10 is equal to 244 minus 1 is a 243. 243 क्या है? Is a factor of 3. 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243. फिर से चेक करना पड़ेगा यहाँ टर्म. Very not difficult sum. 3 3s are 9, 3s are 27, 27
multiplied by 9. This is 243. Yes. So I can write is equal to 3 raised to 5. I can write. But if the power are same, then you can compare the base. Therefore, again you can write this way: the r raised to 10 is equal to 3 is the root 3 square raised to 5. Therefore, r raised to 10 is equal to root 3 raised to 5 2s are 10. The power are same. We can compare the base. Thus, the base is nothing but r is equal to root 3. Good sum. This is the technique of the example to solve the question 17. Whatever expressed I today in this chapter, all are interactive, intellectual, innovative. Next sum. After 17 sum, friends, you can solve 18. बीच बीच में होमवर्क है वो देते जा रहा हूँ आपको. आपको अंदाज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी मेरी पर है उतनी ही आपके पर है. 19, there is a mistake in the question. Don't do the question number 19. 20 you can solve. 21 also. 22 also. And 23 also. These are the friends of the homework question from 6B. अब आइए 6C में. In a 6C, I am giving you selected some. Question 2, question 3. Question 8, this type of question we have solved in exercise of the special sheet. Question 9. क्वेश्चन 9 के बाद आप सॉल्व कर सकते हो. मुझे बताना पड़ेगा. क्वेश्चन 16 देखिए, इज अ गुड क्वेश्चन. 16 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6C 16. XYZ are in AP. XYZ are in AP. तो AP का मीनिंग क्या है? The meaning of AP is what? The difference are same. Therefore, we can say that y minus x is equal to z minus y. तो क्या लिख सकते हो हम? तो we can write is equal to y plus y is equal to x plus z. I may write. Therefore, 2y is equal to x plus z. I can write. Therefore, y is equal to x plus z by 2. किसी चीज का आप यूज कर सकते हो. This is a information for x, y, z are in AP. अब आगे क्या लिखा है? X, Y and Z plus 1 are in GP. X, Y, Z plus 1 are in GP. तो GP का मीनिंग क्या है? I can write the meaning of GP is equal to y upon x is equal to z plus 1 upon y. तो क्या लिख सकते हो आप? You can write the y square is equal to x into z plus 1. You can write this step because all these three progression terms are in GP. जो कहना था वो टर्म को कह दिया. हम आगे बात करेंगे. x y z AP में थे, हमने लिखा y is equal to x plus z by 2. x y z plus 1 GP में है. On that basis we can say that y square is equal to x into z plus 1. बाद में लिखा है then what? See, ये पढ़िए y square, ये है y is equal to x plus z by 2. You can substitute here in this form. Therefore, we can say that the x plus z by 2 square is equal to x into z plus 1. Simplification, friends. Clear-cut simplification that's required. The x plus z by 2 the square is equal to x into z plus 1, open the bracket, x square plus of 2zx plus z square equal to, ये 2 है तो 2 square is a 4
is equal to zx plus x. This is a term. You can do the cross multiplication. By using the cross multiplication, we can say that x square plus 2zx plus z square is equal to 4zx plus x. Sorry, plus 4x. 4zx you can shift on the side. So 2zx minus 4zx is minus 2zx. तो क्या लिखेंगे x square minus 2zx plus z square is equal to 4x. तो ये क्या है? This is the square of x minus z square or z minus x square. Both are same. X minus z square equal to 4x. आपको देखना है ये ऑप्शन आपके पास है या नहीं है. This is a question of simplification by using the thought of APGP. पूरा नया questions. 18th, 16th question. अच्छा समय. Now see here, friends, after 16 question, कुछ एग्जाम्पल है वो आप कर भी सकते हो. देखते हैं, बहुत कम एग्जाम्पल यहाँ आपको सॉल्व करने की बात आएगी. 16 के बाद you can solve example 18. This is interesting question. (21) is the easiest question among all. 22 also you can solve. 23 और काफ़ी टाइम से हम करके आ रहे हैं और लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस दिस ऑल क्वेश्चंस. 23, 25 अब जब आप करेंगे तो जहाँ जो ऑप्शन है वहाँ गलती होगी मगर क्वेश्चन राइट है. ट्राई 25. उसके बाद उस लंबे चौड़े पर जाने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे. दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द 6C. आगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में जो काफ़ी एग्जाम्पल है, तो काफ़ी एग्जाम्पल अलग अलग एरिया से लिया है. इतना करने की ज़रूरत नहीं है. दिस ऑल मेनी क्वेश्चंस आर लेंथी एंड दे आर पुट द 5 मार्क्स क्वेश्चंस. सिलेक्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर द होमवर्क फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. बाकी कुछ लगता है तो मैं करता हूँ आपके लिए. You can solve the question 11, 12, 14. 14, the questions we have discussed in a special sheet. 11, 12, 14, 17, 18. We have discussed the last time the question of the 25. वो भी आप देख सकते हो. And 25 आप जो समझ गए होंगे, you can understand 24. Both are reciprocal of each others. After 25, see the question number 32. Also we have discussed in the last lecture. M और N टर्म की बात ही यहाँ लिखा है P and Q टर्म. काफी पैरल जा चुके हम. Then see friends the question number 35. Question. 36, 38, 39, 45 some. After 53, 54 questions, what is the given question? These are giving the science-based example, and these are the example likely to be asked in a
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो वहाँ अच्छा लगता है। यहाँ पूछा वो सही है, मगर दिस आर द रिस्की क्वेश्चन एंड दिस गेटिंग द 10 to 15 स्टेप्स, प्लीज बी अवॉइड। You can solve the question 61. 61 के बाद 64, थर्टी फाइव में क्वेश्चन लिखा है विच आर डिविजिबल 13 लिखो या मल्टीपल ऑफ 13 लिखो, बहुत सेम है। डिविजिबल मीन जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल इज अ डिविजिबल टर्म, बोथ आर सेम। यू मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, इट्स अ 12th स्टैंडर्ड कंप्लीटेड। सिक्सटी 64, 65, और आगे भी देख सकते हो क्वेश्चन, बताना पड़ेगा मुझे। आप जो देख रहे हो 87, 88 क्वेश्चन जो है, दिस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ द टर्म, इज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ। डोंट डू द क्वेश्चंस। ये मैं पहचान सकता हूं बिकॉज आई नो मैथमेटिक्स। वी मे सॉल्व, इट्स वेरी रिस्की। 90 ऑल्सो डोंट डू। आगे जितना है हम देखते हैं क्या क्या है। 99 you can solve because just similar examples I will solve in this lecture, also in last lecture. 555, 555. This is given 777, 777. 99. 102 you can solve up to infinite term, is a geometric progression. 102 ध्यान से देखिए, रेशियो आपको निकालना है। 102 after this question of 102, you see the page number 6.32 onwards. You can solve the question number 129. यहाँ से यहाँ लिखा है 0.3 plus 0.03, यहाँ 3 बाहर निकालिए, we will get this a 0.1 plus 0.01. Same question we have discussed. Multiply divide by 9, बाद में आपको सोचना पड़ेगा। Same algorithms. 129. After the friends 129 question, you see the question 135, 134, 135. एक मैं करता हूँ, चलो हम करते हैं 135 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 134 तो वैसे हमने किया है 10 टर्म्स वाला, ये लेते हैं 135 क्वेश्चन। सम ऑफ द nth टर्म एडिशनल 135 क्वेश्चन। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 0.5 plus 0.55 to so on. Is the form of the additional 0.5 plus 0.55 plus 0.555 up to so on, up to n terms is given. Now see the question. 5 common. In the bracket we can get this 0.1 plus 0.11 plus 0.00, 0.111 up to n terms. ऐसा ही क्वेश्चन में सॉल्व किया था पहले, सिमिलर क्वेश्चन। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 for getting the terms are very closer to 1. This is the objective of this question. 5 by 9 into bracket of 0.9 plus 0.99 plus 0.999
up to n terms. These all terms are close to 1. How? See here. 5 by 9 into bracket of I may write is a 1 minus 1 by 10. 1 by 10 is a 0.1 and 1 minus 0.1 is a 0.9. Next step. 1 minus 1 upon 10 square. 1 minus 1 upon 10 cube. N terms. This is specification of the questions. 1 you can take separate, 1 upon 10 terms you can take separate. Now see. 5 by 9 into bracket of the first bracket we can write as a 1 plus 1 plus 1 up to n times. Minus of 1 upon 10 plus 1 upon 10 square n times. सेम फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी पता है. 5 by 9 into bracket of n a 1 by 10 into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. This way, friends, you can represent the questions. You can write here 1 by 1 upon 10. You can, instead of 1 upon 10, you can write the 0.1. एक आप ही टाइम में एलसीएम लिया, चलो हम 0.1 में आंसर देते. I can write this 0.1 answer this way. See, I may express this term this way in the difference simplification. N minus of 0.1 into bracket of 1 minus 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1. Here I have written instead of 1 by 10 is a 0.1. Then the location, then the simplification part must be different. किसी से भी करो, simplification will not change. According to option you to rectify which is the closest one. 5 by 9, the same term. Bracket of n minus 0.1 into 1 is a 0.1. Minus 0.1 raised to n into 0.1 is a 0.1 raised to n plus 1. And divided by this term is a 1 minus 0.1 is a 0.9. You can take LCM. That is equal to 5 by 9 into bracket of 0.9n minus 0.1 minus plus of 0.1 raised to n plus 1 divided by 0.9. So just you can just multiply 9 and the 0.9 is a 81, the 8.1. 9 nines are 81, fraction है 8.1. This is equal to 5 by 81 into again the term in the occurring to order, therefore 0.1 raised to n plus 1 plus the 0.9n minus 0.1. ऐसे देखा जाए तो करीबन हम जो पढ़ते थे सीक्वेंसेस तो देखा था इन अ सीक्वेंसेस देयर इज नो एंड. ये आप कह सकते हो तो हम ये चैप्टर 2 महीना भी चला सकते, 6 महीना भी चला सकते, सेम चैप्टर. लैक्स ऑफ आइडेंटिटीज इन द क्वेश्चंस. The various base, if you are coming from commerce, then the base is commercial. If you are coming from engineering, the engineering phase are commercial. If you are coming to pure mathematical or application of science, then the concepts are different. Stay with us. Please note all these points in your book, friends. And then we think other types of the question from module.
यस फ्रेंड, फिर से आ गए हम. We have just finished the question of the 135. Now see. You can solve question 137, 138, 139 also. 139 जो है उसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग है, आप अलग समझोगे, इसलिए मैं दोबारा टर्म पढ़ता हूं. दिस टर्म इज गिवन √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 √2, √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 √2. इस तरह आपको रीड करना है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इन्फिनिट सीरीज है, आपको पता है कैसे करना है. आई गिवन द फॉर्मूला Sn equal to A upon 1 minus R. After this 139 question, friend, you can solve 144 is a question of the geometric progression. 147, 148. Clear? यहाँ तक आप कर सकते हो. And friend, this is the end of the arithmetic and geometric progression. End of the chapter. Complete नहीं हुआ, period बाकी है. The period up to extended up to 6:30. You have timetable. I have given the timetable. और टाइम टेबल की बात आती है तो पहले आप लिख लो टाइम टेबल. टुमारो टाइम टेबल 10:30 to 1:30. आशीष सर, इकोनॉमिक्स. 10:30 to 1 p.m. आशीष शाह, दिस इज फॉर द इकोनॉमिक्स. बाद में घबराइए मत, बहुत लंबा पीरियड आ रहा है कल का. 1:30 to 6:30 पीरियड है. क्यूए मेरा पीरियड है. दिस इज शेड्यूल ऑफ टुमारो. This is the tomorrow schedule. You please not this not in your book first. 10:30 to 1:30. सॉरी 1:30 क्यों बोलता हूँ, आप कहेंगे ब्रेक का क्या है. नहीं, 10:30 to 1 इज ए रेगुलर शेड्यूल ऑफ आशीष सर. बाद में ब्रेक रहेगा 30 मिनट का. आसान है, 15 मिनट में आप खा लेते हो. देन वी स्टार्ट 1:30 to 6:30. बहुत लंबा है, 5 घंटा है. चिंता करने की जरूरत नहीं है. जहाँ लगेगा मुझे वहाँ हम जरूर ब्रेक लेंगे, चाय पीएंगे, नाश्ता करेंगे. टेक इट इजी. I hope so. You return this message. Now there is no SMS from your side. What is the schedule tomorrow, please? I'm always giving schedule of the next day, whether you have got the schedule or not. And now, friends, we discuss the fundamental concept. We start the permutation and the combination. Next chapter. This title of the next chapter is a permutations combination. Permutation combination.